is on OTA, and I will, at the end of this class, I will try to, I hope I'm audible to all of you. Is that okay? Yes, sir. Okay, so I started, I told you about the operational transconductor amplifier, and I discussed with you this differential pair. I hope this first slide is absolutely self-explanatory. This I have already derived in the last, you know, Screen share pri you. okay, okay. अब ठीक है? Yes, sir. Okay. So now you just see here. Here I have given the same differential pair derivation which I have done before. So it has got three parts: A, B, and C. The basic transistor equation is in part A. Differential pair is shown in part B. And here objective is to find functional relationship between V1 minus V2 and I1 minus I2. V1 minus V2 happens to be VD. I1 minus I2 happens to be I out. Now in the C part, the step-by-step derivation has been shown, and which I have already discussed with you. And if you move through, ये पहले derive कर चुका हूँ. So here I out, which is I1 minus I2, turns out to be IB tan hyperbolic VD by twice VT, correct? And when VD is much smaller than twice VT, in that case, tan hyperbolic, this thing can be simply approximated to be equal to VD by twice VT. And then I out will be this. And this I out can be written simply as nothing but VD times GM. In that case, GM will be IB by twice VT. This we have already discussed before. I hope this is clear to all of you. Is Sir, that clear? Huh. sir, can you please send these notes? Oh, certainly. जो पहले दो क्लास हुई हैं अभी की, उसका तो मैंने भेजा हुआ है आपको पहले से. आज इसका भेज दूंगा मैं, डोंट वरी. पहले क्लास तो कर लो. Okay. Okay. Thank you, sir. ये कहने की जरूरत ही नहीं है बेटा. आई एम डूइंग इट रेगुलरली. ओके, सो one second, let me attend to this. Okay, so now this OTA is shown here. Am I audible? Yes, sir. Okay, so symbolically OTA has been shown here in this diagram, where output is current and input is differential voltage V1 minus V2. It is biased with plus minus VC supply, and also there is bias current IB additionally. Op amp से ये different है कि इसमें प्लस माइनस VCC के अलावा एक बायस करंट भी देनी होती है. दैट बायस करंट एक्चुअली it determines what will be the GM of this OTA. This GM is determined by the bias current IB, right? And now there is also the transfer characteristic, which is called the VTC, I out versus VD. So if you plot, it has got the output current varies from plus IB to minus IB, right? So output current will be outward positive if V1 minus V2 is positive, and output current will be inward if V1 minus V2 is negative, correct? And if V1 minus V2 exceeds, अगर V1 minus V2 की वैल्यू plus minus 2VT से ज़्यादा हो जाए, then output current saturates either to plus IB or to minus IB.
ये थोड़ा सा डिफरेंस है compared to the op-amp. Op-amp saturates to plus minus VCC. Here, the OTA saturates to plus minus IB. Correct? So having discussed this, now we can move ahead. And so that's the symbolic representation. We have already discussed the current mirror, the simple current mirror, right? This simple current mirror, as you can see, the I out by IR is beta by 2 plus beta. If beta is much larger than twice, then in that case, I out by IR will be approximately equal to 1. This we have already derived. Current. Now, and here there are two types of current mirrors, where the current is sinking, the NPN Q1 and Q2, and the PNP Q1 and Q2 where current is being sourced out, right? So both are symbolically shown down here. This also I discussed. Let me recap that. So Q1 and Q2 makes differential pair, and this differential pair is biased with the IB. IB is created by the current mirror Q3 and Q4. Here current IB is injected. This current IB can be injected either by connecting a resistance between plus VCC and this, right? Or alternatively, this IB can be injected by connecting a resistor between this point and ground, right? So suppose here you have, let's say, resistor, I'm writing it as IB. Here I'm writing this as RB dash, right? So RB की वैल्यू निकालनी होगी तो VCC को भी कंसीडर करना होगा, और RB dash को निकालना होगा तो only minus VCC will be considered. Correct? All right. So finally, IB current is set here. This IB current provides bias to differential pair Q1 and Q2. And now, as you can see, the I2 current flowing through the collector of Q7 gets transferred to the collector of Q8. And the I1 current flowing through collector of Q5 gets transferred to Q6. The collector current I2 from Q8 also gets transferred from Q9 collector to Q10 collector. So finally, here the I out will be nothing but equal to I1 minus I2, right? So all this circuit consisting of 10 transistors is actually part of this IC, right? So where you have the V1 and V2, the non-inverting and inverting input, you have the output terminal. This is the output terminal. Then you have the bias point, as you can. This is the bias point, which is here, and the plus minus VCC is up and down. This is plus VCC, and down here you have the minus VCC and plus VCC. So that is the OTA. So OTA circuit, OTA, this thing you have seen. This OTA similar to op-amp. Op-amp, जैसा कि आपने number सुना होगा, mu A741 for this OTA commercially available in the market is CA3080, right? और CA3080 का जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सिमिलर टू op-amp है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप उसको नोट कर. इट इज़ ऑल्सो 8 पिन IC, right? So those 8 pins are 3 is non-inverting input, 2 is inverting input, 7 and 4, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 7 is plus VCC, 4 is minus VCC, and 6 will be output. 6 is output. 5 is for injecting bias current. This is where I inject bias current is injected.
सो अगर OTA अगर आपको यहाँ पर लगाना हो, सिंबल दिखाना हो, सो दिस गोज टू आउटपुट, this goes to inverting, non-inverting, non-inverting, inverting. 5 से हम bias current inject करते हैं, and then you have plus minus VCC, plus VCC, and then minus VCC. Is that correct? Is that okay? Yes, sir. This is CA3080, right? Okay, coming back to this. So this is now clear. All right, here let me clarify that RB निकालना होगा. This RB can be found out by writing RB equals to plus VCC. In fact, because this plus VCC is equal to this minus VCC, so you can straight away write twice VCC minus 0.7 divided by the IB. आपको जितनी IB current चाहिए वो पता कर लो, and from that IB current you can decide what will be RB. Similarly, RB dash का formula जो होगा यहाँ पर RB, because it is now going to ground, then RB dash will be simply nothing but only VCC minus 0.7 divided by IB. So that's the difference between connecting RB, towards VCC or towards the ground. Having understood this, now we can move further. What are the linear applications of OTA? So as you can see in this part, again the terminal relationship has been shown. I naught current is given as GM times of V1 minus V2, which is also written as GM times VD. अब सबसे पहला एप्लीकेशन आप देखो नीचे, that is non-inverting amplifier. Correct? So what will be VO? Output voltage here, VO will be I naught into RL. And I naught will be how much? I naught will be GM times of VI. This is the differential voltage, which is VI. And I naught is non-inverting voltage minus inverting voltage times GM. And that difference is actually VI. So GM-VI is the I naught. And GM-VI into RL will be V naught. Correct? So VU by VI from this can be simply written as GM-RL. So this is now a non-inverting amplifier where VU by VI is GM into RL. Correct? Inverting amplifier बनाना है तो हम ये इनपुट के जो टर्मिनल्स हैं इसको आप देखिए इस सेकेंड सर्किट में we have swapped. When we swap, then obviously I naught will be minus VIGM. I naught will be minus VIGM. Correct? Because non-inverting minus inverting voltage times GM is I naught. So that makes it minus. So minus VIGM RL, and therefore VO by VI will be minus GM RL. So that is the inverting amplifier. Now moving ahead, see the third circuit. Third circuit, what I have done, output is now connected to the inverting point. Now just see what will be, and also इसमें important बात है ध्यान देने की that the OTA, ideal OTA has input impedance infinite. So there will be no current flowing here, no current flowing here. This is important to note. Similar to op-amp, right? Input impedance is infinite. Zi is infinite, right? Then with this assumption, see the third circuit. In this third circuit, I have connected VI here. अगर यहाँ VI लगा दो, and this VI will cause II current. अभी II current कैसे flow करेगी? It is shown by the orange arrow. It will not flow through the input. II flows through this and goes inside. Now write down the terminal relationship of the OTA. So non-inverting voltage, which is ground, minus inverting voltage, which is VI, times GM is I naught. I naught outward होती है, correct? But here
if you see these equations, it is now self-explanatory. Minus VIGM is I naught, and VIGM will be minus I naught, and minus I naught is actually in this circuit II. So VIGM is II. VIGM is II. Therefore, Vi by II will be 1 by GM. What does it mean? This means this circuit is behaving as what? This circuit is behaving as a grounded resistor, of which value is 1 by GM. So third circuit is nothing but a grounded resistor. Third circuit is nothing but a grounded resistor. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now let us move ahead. See the fourth circuit. In the fourth circuit, if you compare it from the third circuit, जो third circuit का grounded resistor है, this grounded resistor is now connected here. Can you see that? दिख रहा है जी? राइट. और ये जो ऊपर का नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है, ये यहां है. तो आप दोनों सर्किट को कंपेयर करो. सो ये जो RL है, इस RL की जगह पे ये ग्राउंडेड रेसिस्टर लग गया. इज दैट ओके? और इस GM की जगह पे ये G1 लग गया. इज दैट फाइन? नाउ डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. यहां ऊपर जहां पर RL लिखा हुआ है, वहां पर 1 by G2 लिख देना है. So VO is IO times of 1 by G2. There is, in fact, यहाँ पर आप एक रेसिस्टर लगा हुआ सोच सकते हो. That resistor is nothing but 1 by G2. So IO times 1 by G2 is the VO, and IO is VI G1. So VO by VI is G1 by G2. Non-inverting amplifier. अब ये non-inverting amplifier में देखो बड़े ध्यान से कि G1 is controlled by IB1. G2 is controlled by IB2. Is that okay? G2 will be IB2 by twice VT. G1 will be IB1 by twice VT. So by controlling the bias current, I can electronically control the gain of the non-inverting amplifier. और इंटरेस्टिंगली इस नॉन-इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कहीं कोई रेसिस्टर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं. कैन यू सी दैट? ये पूरा का पूरा बाइपोलर है, ये पूरा बाइपोलर है. नो रेसिस्टर्स, right? And it is electronically controllable voltage amplifier, electronically controllable. Is that okay? Is that fine? Yes. Now see the fifth circuit. Fifth circuit is the floating resistor. Floating resistor बनाने में हमने यूज किया है ये जो grounded resistor है, ये वाला इसका यूज किया है. दो ग्राउंडेड रेसिस्टर को हमने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया अनग्राउंड करके, और बैक टू बैक कनेक्ट करके, एंड देन इफ यू फाइंड आउट इट्स ट्रांसमिशन मैट्रिक्स और इफ यू फाइंड आउट इट्स वाई मैट्रिक्स, you can quickly see that it is nothing but equivalent to a floating resistor of value 1 by G. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों OTA मैच्ड हैं. मैच्ड मीन्स दोनों का जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो सेम है, दोनों से सेम बायस करंट डाली जा रही है to ensure that trans conductance remains same. So here you are causing IB current and you are also forcing here IB current. So if IB current is matched, then trans conductance will be matched.
And if both transconductances are matched, and if the two OTRs are connected as shown in this figure, that will realize a floating resistor 1 by G. You can work out and you can find out that it is actually 1 by G. Now look at the sixth circuit. Sixth circuit is that of non-inverting integrator. What will be V naught? V naught will be I naught times the 1 by SC. And I naught is Vi times G1. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. So I naught and times this is V naught. And if you find out VO by VI from this, it turns out to be equal to G1 by SC. And this is nothing but K by S. And this is what is the equation for VO by VI. If it happens to be K by S, this is called non-inverting integrator. Is that agreeable? Yes, sir. करेक्ट. नाउ सी द सेवंथ सर्किट. सेवंथ सर्किट में अगर हमें इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इनपुट को हमें ऊपर वाले में जो टर्मिनल्स उनको स्वैप कर देना है. व्हेन यू स्वैप इट बिकम्स इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर. इज दैट ओके? Yes, sir. Inverting integrator. Now let us move ahead. See the first order low pass filter. आपने जो ब्यूटी देखी ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर्स की या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स की, and if you try to compare this circuit with those of the op-amp circuits of inverting amplifier, non-inverting amplifier, or inverting integrator and non-inverting integrator, you can immediately appreciate the simplicity and the deriving equations. How simple they are, how easy they are to realize. Is that okay? Yes, yes, sir. Right. Yes, sir. So now see the second order, first order low pass filter. First order low pass filter का इक्वेशन आपको पता है क्या होगा? That will be A naught over S plus omega naught. यही तो होगा फर्स्ट ऑर्डर का, नहीं? Yes, sir. अब इस Yes, sir. ये जो सर्किट है, आठवीं सर्किट ये वाली, इसको देखो जिसमें फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर लिखा हुआ है ना? So what will be, can you see this equation 1? Is that okay? Yes, sir. यहां से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी और यहाँ की वोल्टेज जो है ये V नॉट है, यहाँ की वोल्टेज क्या है? V नॉट है. So Vi minus V naught times Gm is I naught. ठीक है? And I naught flowing through the capacitor produces voltage V naught, which is equation 2. Is that right? So 1 से अगर हम I naught इसमें substitute कर दें, then I get equation 3. Is that okay? Yes, sir. VO by VI is how much? Sir, It is there now, are two V naught. हाँ तो V naught कॉमन ले लो ना, तभी तो थर्ड इक्वेशन बनेगा. VO by VI निकालना है ना आपको. Okay, sir. हाँ, समझिए sir. तो VO by VI निकालना है, तब ये ऐसे हो जाएगा GM by SC plus GM, which is something similar to what we thought we should have for the low pass filter. Is that okay? Yes, sir. So this is the first order low pass filter. I hope you can see the simplicity of the circuit. Now see the ninth circuit. Ninth circuit is that of first order high pass filter.
इस नोड पर आपको KCL लिखना है. What will be KCL there? बोलो. VO minus VI times SC. ये होगी ये करंट जो I नॉट है, I नॉट. और I नॉट आप कैसे लिखोगे? I नॉट विल बी नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज minus inverting voltage times GM. So V1 is 0 minus V2 is V naught times GM. Is that okay? Yes, sir. अब इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करो और फाइंड आउट VO by VI. Then you get this equation SC by SC plus GM. And that is nothing but हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? वो होता है A1S by S plus ओमेगा नॉट. ठीक है? This is what you are getting here. This is first order high pass filter, right? Now let us see a general first order filter, which is the circuit number 10. Right? It consists of two OTAs. मैंने बहुत साफ इसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि करंट कहाँ से नहीं फ्लो कर रही. क्रॉस मीन्स नो करंट फ्लोज. क्रॉस मीन्स नो करंट फ्लोज. अब इक्वेशन 1 is what? Equation 1 is current flowing through this capacitor I1. I1 कैसे निकालोगे? VI minus V naught into SC. Is that okay? Equation 1. Yes, sir. Equation 2 is output current of OTA. This OTA, इस OTA का output current I2 क्या होगा? Non inverting voltage minus inverting voltage times G1, which is VI G1. Is that okay? Yes, sir. ऐसे ही what will be I3? I3 is inward current. Inward current क्या होगी? Inward current होगी inverting voltage minus non-inverting voltage times G2. So this is equation 3. Is that okay? Yes, sir. Then equation 4 is what? Equation 4 is the KCL written at this point. Sorry, KCL written at this point. आउटपुट की नोड पे KCL लिखा गया है. I1 plus I2 is I3. और ये I1, I2, I3 यहाँ लिखे गए हैं. इनको 4 में यूज करके then you just find out VO by VI. Is that right? Yes, sir. So when you work out, you get VO by VI is G1 plus SC by G2 plus SC. और जो जनरल बाइलिनियर ट्रांसफर फंक्शन होता है मैंने आपको बताया था, that is A1S plus A naught over S plus omega naught. Then by careful choice of A1 and A naught, you can make any kind of filter, low pass, high pass or all pass. Right? आपको ध्यान देने की बात है, G1 और G2 जो है they can be made positive or negative. They can be made positive or negative. कैसे? ये जो इनपुट टर्मिनल्स हैं इसके और इसके, इनको अगर हम स्वैप कर दें आपस में, then G1 G2 can be made negative. स्वैप करना समझते हो? Yes, sir. स्वैप करने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस लिख रहा है मैं इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं, तो G1 नेगेटिव हो जाएगा. इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 5 है इसमें G1 नेगेटिव हो जाएगा. राइट? और तब ये क्या बन जाएगा? ऑल पास फिल्टर. फर्स्ट ऑर्डर ऑल पास फिल्टर. बाय द वे डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म नहीं होने चाहिए. Therefore, there is no need swapping the input terminals of G2. Is that fine? Right. Now moving ahead, this is the second order structure. ये बहुत beautiful circuit है. देखो
आपको मैंने RLC रेजोनेटर पढ़ाया था, याद होगा, Yes, sir. राइट? मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ RLC रेजोनेटर। RLC रेजोनेटर में हमने क्या बताया था कि देयर इज दिस R, there is this L, and there is this C, right? Now here I'm naming this as, say, VA, VB, VC, C, L, and R, right? And this is, let us say, V naught. Then you can write KCL at this V naught node. What will be KCL? KCL will be VA minus V naught divided by R plus VB minus V naught divided by SL plus VC minus V naught times SC equals to 0. Is that okay? Yes, sir. ये KCL लिखने के बाद आप इसको मैनिपुलेट करो एंड राइट डाउन V नॉट। V नॉट को लिखो इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इसको वर्कआउट करोगे तो ये इस तरह का आएगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा इस तरह का S स्क्वायर प्लस S बाई RC प्लस 1 ओवर LC। ये तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में हो जाएगा S स्क्वायर टाइम्स VC प्लस S टाइम्स VA, और ब्रैकेट में होगा 1 ओवर RC प्लस 1 ओवर LC टाइम्स VB। ऐसे मिलता है। This is what you get when you solve this equation. You get this. You get this. VA, VB, VC. अब आप गौर से देखो, ये जो VA, VB, VC हैं, इन दोनों को हम मैनेज करके I can find out from this various types of filter functions. Suppose I want to realize low pass filter. तो लो पास फिल्टर में क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन में? लो पास फिल्टर हैज द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द सेकेंड ऑर्डर दिस थिंग। तो ऑब्वियसली नीचे वाला पार्ट तो ये है, दिया हुआ है, इसमें बड़े आराम से यू कैन सी दिस इज नथिंग बट ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड ओमेगा नॉट बाई क्यू नॉट इज व्हाट? ओमेगा नॉट बाई क्यू नॉट इज नथिंग बट 1 ओवर RC, राइट? तो डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर में आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए फॉर लो पास फिल्टर, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर VO by VI शुड हैव कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म सिर्फ ये यहां दिख रहा है, बाकी यहां पर तो S है, यहां पर S स्क्वायर है। तो इन दोनों को जीरो करने के लिए आपको VC को जीरो करना पड़ेगा और VA को जीरो करना पड़ेगा। मतलब आप इसको ग्राउंड कर दो, रेसिस्टर को और कैपेसिटर को ग्राउंड कर दो, और यहां पर इनपुट दो और आउटपुट यहां से ले लो। तो सर्किट कैसी हो गई? सर्किट ऐसी हो गई, इंडक्टर, रेसिस्टर ग्राउंडेड एंड कैपेसिटर ग्राउंडेड। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट, जो एक्चुअली इस केस में क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा। सो VO by VI will be what you see here, the low pass filter. सर आप पढ़ा चुके हैं ये? पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो ये क्या दोनों सेक्शन को पढ़ाया हुआ है मैंने? तो ये नहीं पता। राइट। सो ऐसे ही यहां पर ये 3 इनपुट आप देखो इस सर्किट में, यू कैन सी दैट दिस इज VA, VB and VC, and there is one output. I want to find out VO in terms of VA, VB, VC and G1, G2 and C1, C2.
अब ये निकालने के लिए हमने ये दो केसीएल लिखे हैं I1 और I2। अगर ये केसीएल समझ में आ गया, उसके बाद ये डेरिवेशन बहुत आसान है। लेट अस सी द केसीएल विद द टू इक्वेशंस 1 and 2। इज दिस थिंग ओके? पहली बात आप ये देखो कि दिस नोड इज V, ये डिफरेंट नोड वोल्टेज देख लो। इफ दिस इज V नॉट देन दिस इज ऑल्सो V नॉट। हर चीज देख लो आराम से। यहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, इधर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, इधर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, करेक्ट? एंड नाउ आई होप I1 is agreeable. VA minus VO times G1 is I1. Is that okay? Yes, sir. और ये I1 जो इधर से आ रही है, ये इधर नीचे जा रही है C1 के थ्रू, and that current is this V minus VB times SC1. So equation 1 is now clear. Is that fine? Yes, sir. Now see this I2 क्या होगा? This voltage minus this voltage times G2. So V minus V naught times G2 is I2. Is that fine? और ये I2 इधर से निकल करके इधर जा रही है, और ये करंट इधर से आकर के इधर जा रही है। So that current is what? V naught minus VC times SC2. Is that okay? Yes, sir. So there are two equations, 1 and 2. इन दोनों में क्या चीज है जिसे हमें एलिमिनेट करना है? V. V. Perfect. Beautiful. Smart. So this V I have to eliminate. किसी एक में से V को निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, and then find out this relationship, which is, you can see now here, can you see? VC times something, VB times something and VA times something. और इसको, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो you get finally this. हमने क्या किया है इस इक्वेशन में? C1 C2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। अब आप देखो बड़े ध्यान से, इस थर्ड इक्वेशन में ये जो नीचे वाला है, इससे लो पास, हाई पास, बैंड पास सब बन सकता है। अगर लो पास बनाना है तो हमें VC और VB को 0 करना होगा, सिर्फ VA देना होगा इनपुट। यहां से इनपुट दे दो और यहां से आउटपुट ले लो। सो यू हैव द फर्स्ट थिंग, लो पास फिल्टर, सॉरी दिस इज हाई पास फिल्टर। लो पास फिल्टर ये वाला है, थर्ड वाला। और ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा उस समय? G1 G2 by C1 C2 डिवाइड बाई DS। DS is this thing, this is DS. Is that okay? Yes, Is that sir. okay? This is low pass filter. This one will be band pass filter and this one will be high pass filter. Is that fine? It's so easy. Yes, sir. Correct? अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, कैन यू सी हियर दैट फ्रॉम द दिस थिंग, द ds को आप याद करो, विच इज s² प्लस s इंटू G2 बाई C2 प्लस, ये मैं अलग से लिखता हूं यहां पर, ds इज s² प्लस s इंटू G2 by C2 प्लस G1 G2 by C1 C2, और डिनोमिनेटर है तो इसको हम एक्चुअली, इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होता है s² इंटू ओमेगा नॉट बाई Q नॉट टाइम्स S प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है जो दो OTA यहाँ दिख रहे हैं उन दोनों का G1 G2 दिया हुआ है,
और 2 कैपेसिटर से C1 C2 दिया हुआ है, तो अगर आपको बैंड पास फिल्टर बना रहे हो या लो पास फिल्टर बना रहे हो, तो ओमेगा नॉट जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है बैंड पास फिल्टर की, उस सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट को आप किससे तय करोगे? दैट ओमेगा नॉट विल बी डिसाइडेड बाय दिस G1 G2 एंड C1 C2. तो इलेक्ट्रॉनिकली आप जो बैंड पास फिल्टर है उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर सकते हो. ऑल्सो द बैंडविड्थ क्या होती है? This bandwidth is nothing but omega naught by q naught, and this omega naught by q naught in this case is how much? Is this, so which is now G2 by C2. तो आप बड़े गौर से देखो, जो बैंडविड्थ है उसको हम अगर G2 से कंट्रोल करें और सेंटर फ्रीक्वेंसी को किससे कंट्रोल करें? सिर्फ G1 से, तो आप इत्मीनान से कह सकते हो कि 2 पैरामीटर फिल्टर के इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किए जा सकते हैं. G1 controls omega naught and G2 controls the bandwidth omega naught by Q naught or Q naught. So electronically 2 फिल्टर के पैरामीटर इंडिपेंडेंटली ट्यून किए जा रहे हैं. Is that fine? Yes, sir. So that's the basic of the basic understanding of filter design. अब फिल्टर आपको इससे बनाना है, आप इससे कई फिल्टर बना सकते हो. हाई पास फिल्टर बना सकते हो, बैंड पास बना सकते हो, लो पास. और इन फिल्टर के जो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर मेनली होते हैं? ओमेगा नॉट, क्यू नॉट और गेन. ये 3 पैरामीटर होते हैं. इन तीनों पैरामीटर को हम ट्यून कर सकते हैं. Right? So that's the filter. Right? अब कुछ और लीनियर एप्लीकेशन देखो OTA के. हमने आपको फिल्टर तक बता दिया. Here as you can see, ये तो वही है आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, पहले डिस्कस कर चुका हूं. राइट? इन दोनों को यूज, आप ध्यान से देखो, हमें अगर ये सिंथेसाइज करना हो, थर्ड सर्किट देखो, आई वांट टू सिंथेसाइज V1 VO इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस V3. ये जो यहां से करंट आएगी V1 माइनस V2 टाइम्स G आएगी, वो करंट इधर नहीं जाएगी. दैट करंट विल कम थ्रू दिस, इट विल नॉट गो हियर. और ये एक्चुअली एक रेसिस्टर है. दिस इज नथिंग बट a grounded resistor. So that current flowing through grounded resistor produces some voltage. Let us say that voltage is V. Right? Now V3 minus V times G will be this current. That current is again flowing through a resistor and producing voltage V0. और ये सारा देखो तो it is nothing but VO is V1 minus V2 times V3. अगर ये सारे OTA मैच्ड हों, सभी में बायस करंट सेम जा रही हो, so that the transconductance is same. सभी के transconductance G लिखे गए हैं, है ना? G means all are having the same bias current. Same bias current is being injected to ensure that transconductances are same, that OTAs are matched. If OTAs are matched, then these 4 OTA circuit, it realizes this thing, V1 minus V2 plus V3. Now, obviously, you can knock off one OTA, and by this you can realize the same thing. यहां पर जो करंट होगी वो क्या होगी? V1 minus V2 plus V3. This current plus this current. And that V1 minus V2 plus V3 is flowing through a grounded resistor 1 by G. Again, bias current is same. So VO is nothing but the same thing. But actually, इसको और simplify कर सकते हैं. And instead of 3, the same thing can be realized with only 2 OTA, which I am leaving. ये आप अपने आप करो कि 2 OTA से कैसे बनेगा. Correct?
So the same synthesis can be done with the two OTAs also. So that's the okay. Now when it comes to the nonlinear application, we have already studied nonlinear application of op-amp. Now from OTA, the nonlinear application मैंने बताया कि अगर वो ये जो आप नीचे ये जो देख रहे हो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, राइट, इसमें आप दो तरह के कर्व देख रहे हो, ब्लू एंड द पिंक. सो ब्लू वन इज द रियल वन, पिंक वन इज द आइडियल वन. दैट OTA, अगर इसको मैं इफ आई राइट डिफरेंट रीजन्स में, लेट मी यूज ओके ग्रीन कलर. सो A, B, C एंड D, और पिंक वाले में मैं इसको लेट मी राइट B here and C here. So BC is the linear region. BC region में it follows this relationship that IO is VD times G. Correct? But when it operates in non-linearity, then output saturates to either plus IB or to minus IB. If V1 minus V2 is positive, more than twice VT, then it saturates to plus IB. If V1 minus V2 is negative, more than minus twice VT, more negative than minus twice VT, then it saturates to minus IB, right? Which is what is written here. Correct? So this is the thing. IB outward is positive IB, IB inward is negative IB, right? Okay, now let us see. ये जो सर्किट है ये ऑप एम्प की सर्किट है. आपने शायद मैंने अभी बताया हुआ है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट. दिस इज द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. इसमें मैंने बताया था इट सैचुरेट्स टू प्लस माइनस VCC, राइट. ये जो ब्लू कर्व है ये यहाँ मिलता है, और जो पिंक कर्व है, पिंक कर्व कैपेसिटर के क्रॉस मिलता है. जो पिंक वोल्टेज है वो, ये जो पिंक वोल्टेज है, दिस पिंक वोल्टेज is across the capacitor. Correct? So across capacitor, what you get is exponential waveform of plus minus eta VCC, and at the output you get a square wave of plus minus VCC, right? But that was the story for op amp. अब OTA का हम use करते हैं non-linear applications में. In this figure, lower figure, I have shown the op amp की जो circuit है ये वाली, lower part is what? This is Schmitt trigger, inverting Schmitt trigger, और हमने इसका आउटपुट जो कि प्लस माइनस VCC होगा वो इस OTA के इनपुट में डाल दिया. तो ऑब्वियसली OTA का इनपुट यहां पर क्या होगा? दिस इनपुट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस VCC, एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ड्राइव दिस OTA इनटू नॉन लिनियरिटी. तो अगर इनपुट प्लस VC है तो आउटपुट क्या होगा? प्लस IB होगा. अगर इनपुट माइनस VC है तो आउटपुट क्या होगा? माइनस IB होगा, राइट? अभी जो प्लस और माइनस IB है, ये इससे ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ईदर लाइक दिस और like this, because there is no current flowing through this. So that current I plus minus IB will be only flowing through the capacitor. Okay? और ये जो चार्जिंग कैपेसिटर की होगी, ये ध्यान देने की बात है, this is now linear charging. Because IB is constant. This IB will be constant, and constant current charging gives you ramp. So when there is a positive VB, there is a positive going ramp across capacitor. When there is negative VB, there is negative going ramp across the capacitor. तो जो ऊपर यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म मिल रही थी, यहाँ पर
Here you get exponential. In the same circuit, when I replace the RC by OTA and C, I get linear रैम्प. तो यहां पर दो तरह की वेव फॉर्म बन रही है. आउटपुट पे स्क्वायर वेव बन रही है और इनपुट पे ट्रायंगुलर वेव बन रही है. ट्रायंगुलर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है प्लस माइनस ईटा VCC और आउटपुट पे जो है वो है प्लस माइनस VCC. So that's the nonlinear application. Now it is very easy to find out what will be T1 and what will be T2. Correct? How to find out T1 and T2? There is this capacitor. Capacitor is charging with IB current. Capacitor value is C. So what will be the voltage across this? VC. VCT will be 1 by C integral I dt. I is constant. अब ये you can write this as what? I is constant is IB times T divided by C. तो अगर आपको IB पता है आपको और ये कितने टाइम में, in how much time this voltage VCT should reach to what? This should reach to plus eta VCC और eta की वैल्यू आपके पास यहां पर इस R1 और R2 से मिल जाएगी. What is that? Eta will be R1 divided by R1 plus R2. So this is known, right? VCC is known. And therefore eta VCC will be this. तो eta VCC की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो गई. आपको IB पता है, आपको C पता है. अब ये बड़े आराम से पता कर सकते हो कितने टाइम में ये eta VCC पहुंचेगा. So therefore you can find out it starts from here and goes up to here. Starts from where? Plus eta VCC and goes up to minus eta VCC, and this is the time T1. Similarly, this starts minus VCC, goes up to plus VCC, and that's, let us say, T2. So you can find out T1 and T2 from this equation, and therefore frequency can be computed. That's the nonlinear application of OTA. Of course, in collaboration with the op-amp nonlinear circuit. Correct? If you have time, I would like to finish quickly log and anti-log amplifier. Is that okay? Should I go ahead? सर EKM1 पूरी लीव कर गई है. Pardon? सर EKM1 लेफ्ट कर चुकी है. क्यों? Why? सर है पूरी नहीं लेफ्ट. अच्छा, 1 second, let me attend.
Okay, so I was just asking कि कैसे सारे छोड़ के चले गए भाई? फिर एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि शायद सभी नहीं गए हैं, कुछ हैं अभी यहाँ पर. So tomorrow again we will have class from 6 to 7. I'm stopping here because this is only 35 students. You can quickly mark your attendance, right? And